Welcome students. Our next exercise is exercise 4.1 and we'll discuss the exercise questions from this exercise. The first question is which of the following are rational numbers? So what are rational numbers? Rational numbers are numbers which are in form of p upon q, where q shouldn't be 0. Okay, so we'll select those numbers, those fractions which are in form of p upon q and q is not 0. So 4 upon 5, minus 9 upon 15, minus 12 upon minus 1, minus 7 upon 1, 0, 0 upon 9, minus 4, minus 3 upon 2 and 2 upon 3. They are rational numbers because they are in form of p upon q, and the denominators in all these questions, all these numbers are not equal to 0. Okay, and the remaining numbers which are in this question are all not rational numbers or irrational numbers, which are write the following rational number as integers. Okay, so 0.12. okay, so what are integers? Integers are simply your positive or negative numbers. Okay, so we will all we need to do is we need to remove the denominators if possible. So 0.12 will give you what value? It will give you 0. So 0.12 is 0 and 0 is a integer. Then 9 upon minus 3, reduce it. 3 ones are 3 and 3 threes are 9, so that would be minus 3 upon 1. We will remove when 1 is your denominator, we don't show it. Okay, when 1 is denominator, we don't show it, but it can be used whenever necessary. So since 1 is a denominator, so we can write it also as minus 3. Then minus 4 upon 1, both the numerator and denominators are having negative sign, so we will cancel it out. So the fraction will become 4 upon 1. Again, 1 is the denominator, so we don't show 1 as denominator, so we can write it as 4. Next question is question number 5, which is write the following integers as rational numbers. Okay, so now here integers are given and we have to show them as rational numbers. So what are rational numbers? Any fraction in form of p upon q where q is not 0. So if q is not 0, q could be anything. So the easiest way to show integers as rational number is that we show the denominator as 1 in all the parts. So minus 1 can be represented as minus 1 upon 1. So it is in form of p upon q. Okay, and q is not 0. Similarly, 0 can be represented as 0 upon 1. Okay, so this is also a 0 is a rational number. Why? Because the denominator is 1 here and not 0. Thus 0 upon 0 is or 0, which is an integer, can be represented as rational number in this form. Okay, moving to the next part, which is 45. So 45 is written as 45 upon 1. Now next question is write the numerator and denominator of the following. So what we have to do, we just have to mention what is the numerator and the denominator in the given fraction. So minus 8 upon 16, what is the numerator? Numerator is the number which is written on the top. Okay, and the number which is written at the bottom is the denominator. So numerator is minus 8 and denominator is 16. Okay, whatever is the sign, just write it as it is. Then 7. Now 7 is just shown in form of integer. So how first of all we'll convert it into rational number. So that would be 7 upon 1. Okay, since no denominator is there, when no denominators are there, so 1 is always the denominator if no denominator is in a number. So 7 upon 1 is the rational number. So what is the numerator? 7, and what is the denominator? 1. Then next is 12 upon minus 19. So numerator is 12 and denominator is minus 19. Next question is identify the following as negative or positive rational numbers. Okay, so negative and positive number, if either numerator or denominator किसी भी एक के पास अगर नेगेटिव साइन लगा है, सो दैट नंबर वुड बी अ नेगेटिव रैशनल नंबर. अगर दोनों में नहीं लगा है देन पॉजिटिव, अगर दोनों में लगा है देन ऑल्सो पॉजिटिव. ओके, सो 12 upon 7, numerator also positive, denominator also positive, so this is a positive rational number. Then minus 6 upon 3, numerator is negative, denominator is positive, 1 is negative. Okay, so what we'll do, this is a
negative rational number. Now moving to the next part, which is 9 upon minus 11. Okay, 9 upon minus 11. Now numerator is positive but denominator is negative, so this is again a negative rational number. Moving to the next part, which is minus 6 upon minus 30. Now here both the numerator and denominators are negative, so when this is the case, what do? We remove both the negative signs, so the number has become 6 upon 13. Okay, so as you can see, no negative sign is there in both numerator and denominator, thus it is a positive rational number. Next part is 0. Now 0 is neither positive nor negative. This we have studied in our integers, so this follows here also. 0 is neither positive nor negative. 11 can be written as 11 upon 1, so this is a positive rational number. So the next question is question number 8. Express each of the following as positive denominator. We have to express the given fractions as positive denominators. Okay, so what we will do? 15 upon minus 7. So denominator is negative, so how to make denominator positive is we multiply both numerator and denominator by minus 1. Okay, whenever they will ask you to make numerator positive, then also we'll do the same thing, and if they have asked you to make denominator positive, then also we'll do the same thing. Okay, so here they are asking us to make denominator positive, so whatever the fraction is given, just multiply both numerator and denominator by minus 1. So 15 multiplied by minus 1 is minus 15, and minus 7 multiplied by minus 1 is positive 7. Okay, so here minus 7 is converted from negative to positive. Okay, so next is minus 18 upon minus 11. Both numerator and denominators are negative, so we multiply it with minus 1 in both the numerator and denominator, so that will become minus 18 multiplied by minus 1, positive 18, minus 11 multiplied by minus 1, positive 11. This is how we convert denominator from negative to positive, and we can change it also. Okay, if they are asking you to convert positive integer to negative, okay, then also we'll do this only. This is multiply the given rational number with minus 1, whatever they are asking to do. They are asking you to convert from positive integer to negative integer, you will follow the same method. They are asking you to change positive denominator to negative denominator, again same thing. If they are asking you to change the rational number into positive numerator, then also we will do the same. So in the next question, what we have to do is we have to make the numerators positive. So first part is minus 12. So minus 12 can be written as minus 12 upon 1. We'll multiply both numerator and denominator by minus 1. So minus 12 into minus 1 is 12, and 1 into 1 minus 1 is minus 1. So we have changed minus 12 to 12. Again minus 33 upon 25. Same way, minus 33 upon 25 multiplied by minus 1 upon minus 1. Minus 33 multiplied by minus 1 is 33, while 25 multiplied by minus 1 is minus 25. Now, moving on to the equivalent rational numbers. So, what are equivalent rational numbers? We have to write 4 equivalent rational numbers. Equivalent rational numbers are those rational numbers which, although don't look same, but if we divide or multiply it with any rational number, they will start looking same. For example, minus 3 upon 7, they have asked you 4 equivalent rational numbers of minus 3 upon 7. So how can we write 4 equivalent fraction? By multiplying it with 4 numbers. Okay, so never multiply any for calculating equivalent fractional number. Never multiply or never start by multiplying it by 1. Okay, why so? Because if you will multiply any number by 1, you will get 1 only. So we always start by 0. We always start by 2. Okay, so minus 3 upon 7 multiplied by 2 upon 2, both in numerator and denominator. Whatever you do to get the equivalent rational number, you divide or you multiply, that has to be done in both numerator and denominator. So minus 3 upon 7 multiplied by 2 upon 2. So minus 3 into 2, minus 6, 7 2 is 14. Again minus 3 upon 7 multiplied by 3 upon 3, 3 3 is 9 and negative sign. Then 7 3 is 21. Similarly, next minus 3 upon 7 multiplied by 4 upon 4. Minus 3 into 4, minus 12. 7 upon 4 is 28.
Next, minus 3 upon 5, minus 3 upon 7 multiplied by 5 upon 5. Minus 3 into 5 is minus 15. 7 5s are 35. So these are your 4 equivalent rational number. Now, if you want to check yourself if the answer is correct or not, what do? You just cancel it out. Simply cancel it out. So let's cancel this one out. So this will be what? This will go by 2, 2 6 are 2, 1s are 4s are again 2 3s are 17 7s are. ठीक है, this has become what? 3 upon 7 and negative sign was also there, so minus 3 upon 7. See, if we cancel this out, okay, division करने पे minus 3 upon 7 वापस आने लगा. So although minus 3 upon 7 and minus 12 upon 28 don't look same, okay, don't resemble same, digits different है, but if we reduce minus 12 upon 28 a little bit, it will give you minus 3 upon 7, which proves that minus 3 upon 7 and minus 12 upon 28 are equivalent rational numbers. So next part in the same question is minus 3 upon minus 11. We have to find 4 equivalent rational number for this. So doing it in the same way, minus 3 upon minus 11 multiplied by 2 upon 2. 3 2s are 6, 11 2s are 22, and putting both the negative signs in numerator and denominator. Similarly, minus 3 upon minus 11 multiplied by 3 upon 3, minus 3 into 3, minus 9, minus 11 into 3, minus 33. Then minus 3 upon minus 11 multiplied by 4 upon 4, that would be minus 3 into 4, minus 12, minus 11 into 4, minus 44. Then minus 3 upon minus 11 multiplied by 5 upon 5, that would give you minus 3 into 5 is minus 15, and minus 11 into 5 is minus 55. So these are the 4 rational equivalent rational numbers. Okay, if you want to check again, you can check it again, like see, 3 3s are 9 and 3 1s are 1s are. So minus 3 upon minus 11, again you will start getting as you will reduce it. So which means we have done it correctly, and minus 3 upon minus 11 is equivalent to minus 9 upon minus 33. Now, following the same concept of equivalent rational number, our next question is based on the same. Okay, so question is fill in the blanks. They have given you 7 upon 12, and then they have given you few more rational numbers, but either numerator or the denominator is missing here. But what they have given you? They have given a equal to sign between all the rational numbers. That means they all are equal to each other. Okay, they all are equal to each other, which means they all are equivalent rational number. Okay, although they will not look same, but when you will multiply or divide it, they will start giving you the same answers. So they are, since they have put a equal sign, so that means they are equivalent rational numbers. So what we have to do? We have to calculate what will come in this box. So in such cases, what do? We first see that fraction of that rational number which has both numerator and denominator, in which both numerator and denominators are given. So 7 upon 12 is that number where both numerator and denominator are given, and 7 upon 12 is equal to 35 upon box. So we will write it, we'll take two numbers at a time. So 7 upon 12 is equal to 35 upon box. Now what to do? Whatever is given, okay, whichever part is given on both sides. See, numerator is given on both sides, but in denominator, one denominator is given, other we have to find out. So whatever is given on both sides, here numerator is given on the both sides. So what we will do? We will do the division of those numbers. So 35 and 7 are given. 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 35 आने लगे. तो to calculate that, what we'll do? We'll divide these numbers. So 35 divided by 7 will give you 5. Thus 7 upon 12 डिवीजन करके जो आंसर आएगा उसे ओरिजिनल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है. सो हमें क्या करना था पहले? अगेन आई एम रिपीटिंग इट. सबसे पहले क्या करना था? हमें वो रैशनल नंबर ढूंढना है जो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो 7 अपॉन 12 हो गया वो. देन इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ब्लैंक, जिसमें फर्स्ट ब्लैंक दिया हुआ वो हमने पिक किया, तो 35 अपॉन बॉक्स. नाउ
वो अगर न्यूमरेटर दोनों तरफ दिए हुए हैं तो न्यूमरेटर्स पिक करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर्स दोनों तरफ दिए हैं तो डिनोमिनेटर्स पिक करेंगे. इसमें न्यूमरेटर्स हमें दोनों तरफ दिए हुए हैं. सो वी विल स्टार्ट विद दैट. 35 डिवाइडेड बाय 7, दैट वुड बी 5. सो जो भी आंसर यहाँ से आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल रैशनल नंबर से. सो 7/12 मल्टीप्लाइड बाय 5/5. जैसे ही इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 7 5 जा 35. सी यहाँ पे 35 पहले से भी लिखा हुआ था, 35 आ गया. तो 12 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 60. सो व्हाट विल कम इन दिस बॉक्स, 60. नाउ वी हैव फाउंड फर्स्ट बॉक्स. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर को थर्ड से करेंगे, देन अगेन फर्स्ट को लास्ट से करेंगे. सो फॉलोइंग इन द सेम वे we'll continue. So it is 7/12 is equals to minus 63 upon box. Again what we'll see, what part is given on both sides. So numerator again here is given on both side. So हम लोग डिविजन करेंगे. तो -63 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव यू -9. सो जो भी आंसर आया है उसको 7/12 से मल्टीप्लाई करना है. तो 7/12 मल्टीप्लाइड बाय -9 अपॉन -9. 7 9 जा 63 और माइनस का साइन था, माइनस आ गया. तो -63 हैज कम, विच मीन्स यहाँ तक हमने सही किया है. अब 12 9 इज 108 और माइनस का साइन. सो वी हैव गॉट द सेकेंड आंसर ऑल्सो. Okay, we have got the second answer. Now comparing 7/12 with the last box. So 7/12 is equals to box upon -120. Now here one numerator is missing, so we can't compare numerators as we did in last two parts. Okay. Now here both the denominators are given, so we will do the division between denominators. So -120 divided by 12 will give you -10. Okay, be careful about signs. -10. So now we will multiply the fraction by -10. So 7/12 into -10 upon -10, that will give you 7 into -10 is -70. 12 into -10 is -120. See, -120 we have got, so that means whatever is there in the box is our correct answer. So that's writing the final answer. We have got the answers for all the boxes. Now next question is, we have to express the given rational number -12/15 as they are asking us to do. Okay, so we have to express -12/15 as a rational number which has denominator as -45. अभी डिनोमिनेटर 15 है, हमें इसे ऐसे कैलकुलेट करना है कि डिनोमिनेटर -45 हो जाए. वी हैव टू डू इट इन द सेम वे, जैसे ये क्वेश्चन किया था बिल्कुल सिमिलर वे में हमें ही करना है. ठीक है, तो करेंटली व्हाट इज आवर रैशनल नंबर, -12/15. एंड व्हाट आर दे आस्किंग अस टू डू विद द डिनोमिनेटर, दे आर आस्किंग टू चेंज डिनोमिनेटर फ्रॉम 15 to -45. तो जो चीज़ चेंज करनी है हम उसके बीच में सबसे पहले यहाँ पे भी डिवीजन चल रहे थे ना, कर रहे थे, तो वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी करेंगे. 15 पहले से डिनोमिनेटर दिया हुआ है, उसको बनाना कितना है 45. सो हम लोग उसके बीच में ही डिवीजन करेंगे. -45 डिवाइडेड बाय 15, सो दैट विल गिव यू -3. यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन जो गिवन रैशनल नंबर था उससे करेंगे. सो -12/15 मल्टीप्लाइड बाय -3/3. -12 इंटू -3 इज +36 एंड -15/3 इज -45. ठीक है, सो वी हैव कन्वर्टेड. देखो हम लोग का जो रैशनल नंबर था उसका डिनोमिनेटर चेंज हो गया. वी हैव कन्वर्टेड -12/15 to 36/-45 एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर 15 से चेंज होकर -45 बन गया. ओके, ऐसे ही करना है. फर्स्ट पार्ट वॉज कि हमें डिनोमिनेटर को -45 बनाना है. इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू चेंज डिनोमिनेटर फ्रॉम 15 to 60. ठीक है, 15 जो डिनोमिनेटर था उसको अब हमें 60 बनाना है. तो सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही करेंगे. 60 डिवाइडेड बाय 15 जो बनाना है और अभी जो है दोनों डिनोमिनेटर्स को डिवाइड कर दिया. ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 15 दैट वुड बी 4. वट एवर आंसर वी हैव गॉट वी विल मल्टीप्लाई that answer with -12/15. So -12/15 multiplied by 4/4. -12 into 4 is -48. 15 4s are 60. So we have again changed the denominator from 15 to 60. Okay. In the next question, they are asking you to change numerator. This question is also similar to the last one, but here they are asking you to change numerator. So express -60/72 as rational number with numerator 60. Okay, now one thing you should remember that अगर हम स्मॉलर रैशनल नंबर से बिगर रैशनल नंबर बना रहे हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं,
और अगर हम बिगर रैशनल नंबर से स्मॉलर वैल्यू पे जा रहे हैं तो डिवीजन करके आंसर निकालेंगे। कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और कहाँ पे डिवीजन, ये जो आंसर आता है ना डिवीजन करने के बाद, यहाँ पे डिवीजन किया, हर स्टेप में पहले डिवीजन करते हैं फिर जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे अभी तक। तो डिफरेंस ही यहाँ पे क्या है, 15 को 45 बनाना था, छोटे नंबर से बड़े नंबर पे जाना था, तो जो आंसर आया डिवीजन करने के बाद उसका हमने मल्टीप्लिकेशन किया। ऑलराइट, यहाँ पे भी लुक एट दिस, 7 को 7 से 63 बन रहा था, यानी कि 7 से 63 अगर बना है तो यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ गए हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके गए होंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो भी हमारा डिवीजन करके आंसर आया उससे मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, बट हियर इफ़ यू सी -62.72 इज रैशनल नंबर और हमें न्यूमरेटर चेंज करना है, तो यानी कि -60 से 30 पे जाना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जाना है। डोंट लुक एट द साइन, वैसे आप कहोगे कि -60 स्मॉलर दैन 30, वो नहीं देखना है, सिर्फ नंबर्स चेक करिए। 60 से 30 पे जा रहे हैं, ओके, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं। सो इन सच केसेस व्हाट वील डू डिवीजन ऑफ द आंसर जो हमें आएगा। फर्स्ट स्टेप में जो डिवीजन करते हैं वो तो करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उससे जो आंसर आता है उससे भी डिवीजन करेंगे। ओके, सो हमें क्या चेंज करना था, हमें न्यूमरेटर को चेंज करना, तो अब डिवीजन न्यूमरेटर के बीच में होगा। -60 डिवाइडेड बाय 30 दैट वुड गिव यू -2। सो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, जो ओरिजिनल रैशनल नंबर है -60.72 डिवाइडेड बाय -2 दैट वुड गिव यू, डिवीजन करते ही 30 आ जाएगा एंड हियर यू विल गेट -36। सी -60 से न्यूमरेटर चेंज हो गया 30, बड़े नंबर से छोटे नंबर पे आ रहे हैं इसलिए डिवीजन किया है। ओके, फॉलोइंग द सेम कॉन्सेप्ट हियर ऑल्सो, -60 से अब न्यूमरेटर बनाने को कह रहे हैं -15। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में डिवीजन कर लेंगे, सो -60 डिवाइडेड बाय -15 will give you 4. Now whatever answer we have got, we will divide this answer by -60/72 would be divided by this answer. So -60/72 divided by 4/4, -60 divided by 4 will give you -15 and 72 divided by 4 will give you 13. So we have changed -60 to -15. Alright, now write in standard form. Standard form is nothing but cancellation. कैंसिल करना है आपको कि हम जितना भी गिवन रैशनल नंबर को किसी भी नंबर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। सो -24 अपॉन -84, पहले तो माइनस साइन कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, देन यहाँ पे 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा। ठीक है, और आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे करते हैं, गलती ये करते हैं कि जब तक ऊपर वाला नंबर कट रहा है काटते जा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये नहीं देख रहे हैं कि नीचे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऐसे नहीं करना, ऊपर काट रहे हैं तो साथ में नीचे भी काटेंगे। जब दोनों नंबर्स की कटिंग एक ही नंबर से होती है तभी वो कैंसिलेशन पॉसिबल होता है। ये नहीं कि ऊपर 2 से कटता जा रहा है तो काटते जा रहे हैं, नीचे 2 से कट ही नहीं रहा तो उसको छोड़ दिया, उसको 3 से कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ऊपर और नीचे एक ही नंबर से कटिंग करनी है और हर स्टेप में ऊपर और नीचे में करनी है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर करते जा रहे हैं और नीचे नीचे कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ दिस इज बिकम 12/42, अगेन 2 से करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अभी 21 हो गया, अभी 2 से तो जाएगा नहीं, तो अभी किससे जाएगा, 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। सो द रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, क्या आया है, 2/7। सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन -21/47। सो -20 माइनस पहले तो कट जाएगा, 21/49, सॉरी 21/49 इज गिवन। सो किसकी टेबल में आता है, सीधे 7 की टेबल में। 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49। सो द फाइनल आंसर इज 3/7. Next is 91/-273, 273. So this can be done in various ways. सबसे पहले इसको हम लेके जा सकते हैं 7 से, और we can also calculate it by 13. So I have done it by 13 first. 13 7 ज़ा 91, 13 2 ज़ा 26 एंड यहाँ पे 1 बचता, 13 1 ज़ा 13। अब 7/21 बच रहा है, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज 1/-3। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हम कभी भी रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं। रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखते हैं, उस नेगेटिव साइन को हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर न्यूमरेटर को दे देते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है, अगेन
हमें अगर नेगेटिव न्यूमरेटर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम -1/3। तो हम ये स्टेप शो नहीं करते हैं, ठीक है, हम सीधे डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन न्यूमरेटर को दे सकते हैं। न्यूमरेटर्स कैन बी नेगेटिव, लेकिन हम डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं शो करते हैं। ओके ओके, आवर लास्ट question number 19 has to be done in book, so let's discuss this also. A rational number is said to be dash if both numerator and denominator are of same sign. If both numerator and denominator are of same sign, तो rational number will be called positive. Okay, set of positive numbers, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड सेट, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो और जीरो भी हो, उसको क्या बोलते हैं, integers. Now a rational number is said to be in the lowest form if dash of the denominator and numerator is 1, HCF. A rational number is said to be in standard form if its denominator is positive. अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि हम कभी भी डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। तो क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। And last question here is that we have to write true false. So every integer is a rational number. This is true. Okay. 0 is not a rational number. That is false. 0 is a rational number. Every fraction is a rational number. This is true. And then a rational number is said to be negative. If its numerator and denominator are of same sign. No. If numerator and denominator have same sign, then it is positive. So this is a false statement. So that's all for this exercise. If you have any doubt, you can always ask.